Good morning, everyone. Welcome to the SS Geography class. Today, we'll continue with the topic maps. Here, we have first topic types of maps. Start reading. The word map has been derived from the Latin word mappo, meaning napkin. Maps are used for learning and understanding various features of our planet Earth. As in the previous video, I have told you the importance of maps. It also told us about this importance of maps that we got to study the features of our planet Earth. हमें क्या है मैप्स में क्या मिलते हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था कि फिजिकल मैप्स, दिस इज़ अ फिजिकल मैप. अब यहाँ पे हमें काफ़ी फीचर्स देखने को मिलते हैं अर्थ के बारे में, डैट वेयर इज़ द माउंटेन एरिया एंड वेयर इज़ द ग्रीनरी, वेयर इज़ द सदर्न प्लेट्यूज, the deserts or the coastal areas. So these are one of the features of Earth. For various needs, different types of maps are used. हम मैप्स को यूज़ करने के लिए बहुत सारी ज़रूरतें हैं, कोई एक या दो ज़रूरतें नहीं हैं जो हम यहाँ मेंशन कर देंगे. There are various needs to use map. For example, there can be many maps of India. Yes, we have many states. We have a number of 28 or 29 states. So, on the basis of states, maps can also be divided. Like we are studying a map of Punjab and we are studying a particular area, Amritsar. So, we can also have a map of Amritsar or Punjab itself. One map might show the boundaries of different states. As I have told, we can have a map of one state, while the other might show air routes and railway routes. In case an engineer has to study the project of making flyover in a city, so how will he manage his project? How will he get the idea of where to start and where to get going the work? तो वो क्या करेंगे, वो अब ऐसा तो है नहीं जैसे बठिंडा में किसी ने फ्लाईओवर का मतलब बनाना है, फ्लाईओवर स्टार्ट करना है, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है अपना, तो क्या करेंगे वो सिंपली उस जगह का मैप लेंगे, उस मैप पे देखेंगे कि कहाँ पे स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ पे इसको हमने रूट चेंज करने हैं. आप सबने ये हमारे पंजाब का तो फ्लाईओवर देखा हुआ है ना, फाजिल्का का. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हाँ, आप कुछ लोग फ्लाईओवर के नीचे से जा रहे हैं, कुछ लोग फ्लाईओवर के ऊपर से आ रहे हैं. तो देयर आर the road is divided into 3 routes. One route is divided into 3 routes. So किसकी हेल्प से होता है? ये मैप की हेल्प से होता है. हम मैप पे देखते हैं कि यहाँ से लेके हमें यहाँ तक एक फ्लाईओवर मेड करना है, तो किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं हम? मैप्स के हेल्प से ही बनाते हैं. There are different types of maps used for various purposes. One can select the specific type of map as per his need. We can depict any type of map according to a need. For convenience, maps has been classified into 2 categories. First, maps according to scales, and second, maps according to functions. On the basis of maps according to scales, we have 2 types of maps: small scale maps and large scale map. It is very simple to understand. When we have to study a large area, then we will have small scale maps. Like this India map, it is on a small scale. India actual में इतनी इस size का नहीं है. We have represented India in a small scale area or small scale map. These maps are used to indicate a very large area with few details. Here we have few details. We don't have states and capitals included in this map, and we don't have the thematic map like we have done in the previous
lecture the amount of rainfall which is included in map. No, because this is on a small scale. We can't include so many features or so many things in simple one map. Only one thing like physical factors can be included in this map because it is small scale map. The maps on the wall of your classroom or in any atlas are small scale maps. Atlas is a book which is consist of every type of every cities or every country's map, including world map. They show large areas of land on small scale. In very simple words, what are small scale maps? These are the maps showing large scale areas on small scale with least feature details, which have less features or less details mentioned in it. Next we have large scale maps. In simple words, what is large scale map? When we have to study a small area on large scale, like zooming out the area. हम फोन्स पे देखते हैं ना, जब हम जूम करते हैं, किस लिए जूम करते हैं? बिकॉज वी हैव टू गो फर्दर इन द डिटेल्स. हमें उनकी ज़्यादा डिटेल्स लेनी होती है. फर्दर डिटेल्स स्टडी करने के लिए हम उसको डीप में जाते हैं. सेम इन द केस ऑफ लार्ज स्केल मैप, depicting a small area and representing it on a large area. These maps are used to show a very small area with many details. When we have to study many details on a large scale of a small area, then we use large scale maps. जब भी हमें किसी, जैसे मैंने पंजाब का एरिया लिया है, ठीक है, और मुझे उसको स्टडी करना है, उसके बेसिक फीचर्स को स्टडी करना है. अब मैं फाजिल का क्या मैप कैसे ले लूँगी? अब मेरे को यहाँ पे पंजाब दिख रहा है बट यहाँ फाजिल का नहीं दिख रहा है. सो दिस इज़ अ स्मॉल स्केल मैप. व्हेन आई जूम इन इट इन, जब मैं इसे जूम करूँगी और यहाँ पे सिर्फ पंजाब का मैप होगा, देन इट इज़ ऑन अ लार्ज स्केल मैप. The guide map of cities used by tourists and the layout maps of villages and towns are large scale maps. Naturally villages and towns क्या होंगे? Small areas हैं. जब हम उनका layout map का लेते हैं तब वो क्या होते हैं? Large scale maps. They contain many detail about various landmarks, for example hospitals, railway stations and roads. इन मैप्स में हम क्या स्टडी करते हैं? जैसे मैंने एक मैप ले लिया, जलालाबाद का मैप, ठीक है. अब मैं वहाँ स्टडी कर सकती हूँ कि इस जगह पे हॉस्पिटल्स है, यहाँ इस वाले एरिया में रेलवे स्टेशन है, रेलवे ट्रैक्स है, और यहाँ पे रोड्स है. So these kind of features can be studied on large scale map. Next, maps according to functions. According to functions, maps have been divided into three main categories. First, physical, second, political, and third is thematic. As the words indicates, physical maps are the maps which shows various landmarks like mountains, valleys, plains, rivers, plateaus, and oceans. These show physical features of a place. For example, the water bodies are shown in blue and the mountains are shown in brown. These maps help in the planning of cities and colonies, for building roads and dams, and for establishing railway lines. Simply, when we have to study the physical factors of a place, then we use physical maps. I have already explained this map. You can check the previous video. Next we have political maps. These maps shows the boundaries of continents, countries, states and capitals and major cities and towns. These maps help in studying different types of cultural, historical and economic activity. This is also has been explained. Political maps are the maps which show boundaries of continents, countries, states and capitals. Next, thematic map. These maps are used on particular subjects or themes. अब हमने यहाँ पे क्या थीम लिया है? जब हम थीमेटिक मैप कौन सा होता है? व्हेन वी हैव अ पर्टिकुलर थीम ऑफ इंटरेस्ट. लाइक मैंने यहाँ पे रेनफॉल चेक करनी है कि किस एरिया में कौन सी रेनफॉल है. आई विल बी रिप्रेजेंटिंग द कैटेगरीज इन डिफरेंट कलर्स एंड शो इट इन अ मैप.
In the same way, you can also take the climate differences of the areas, agriculture differences, rainfall, population distribution, minerals and industry. When you have to differentiate on these types of themes, you will call these as themes. जब आपको इनको डिफ्रेंशिएट करना है, कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे एवरेज है, कहाँ बिलो एवरेज है, कहाँ पे वेरी हाई वेरी लो, जब आपको